Hello, students, and welcome back to the DCAS initiative. My name is Swaraj. So, without wasting time, let's start with the first news. So, Ministry has started the process to invite tenders for privatization. ठीक है, Ministry of Railway has kick-started the process to allow private players to operate certain trains on its network by inviting request for qualification for operating passenger train service on over 100 routes with 150 modern trains. The project will bring private sector investment of around 30,000 crores. So how it will work? Trains said to have bought by private operators and maintained by them. Fares of private trains will be competitive and prices on the other modes of transport like aeroplane, buses have to be keep in mind while fixing the fares. Private participation in passenger operation will only be 5% of the total operations of railways. मतलब 95% का जो ट्रेन्स है that will be still under the control of Indian Railways. तो 5% ट्रेन ही हम लोगों ने प्राइवेटाइज किया है, but rest 95% is still under government control. So what is the objective? To introduce modern technology, reduce transit time, create jobs, provide enhanced safety, world class travel experience to passenger, reduce demand supply deficit in the passenger transportation sector. Then biofuels, basically a topic news में था. So let's see what is a biofuel. Any hydrocarbon fuel that is produced from an organic matter, ठीक है, living or was living in a short period of time is considered a biofuel. बायोफ्यूल बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. ठीक है, सॉलिड में देखना वुड, लिक्विड में बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल, गैसियस में बायोगैस. So classification of biofuels. Biofuels are classified into four types: first generation, second generation, third generation and fourth generation. First generation biofuels are called conventional biofuels. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स को क्या बोलते हैं. तो कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स बोलते हैं. दिस फ्यूल्स आर बेसिकली मेड फ्रॉम ईटेबल्स. ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उससे बनाते हैं हम लोग बेसिकली. एनी बायोफ्यूल मेड फ्रॉम फीड स्टॉक that can also be consumed as a human food is considered as a first generation biofuel. याद रखना. Then second generation biofuels are produced from sustainable feedstock. Means no second generation biofuel is a food crop. ठीक है, तो कोई भी food crop second generation नहीं है. Second generation biofuels are often called as advanced biofuel. ठीक है, and these biofuels are no longer useful for कंजम्पशन. फर्स्ट जनरेशन जो है वो कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हो, बट सेकेंड जनरेशन जो है वो कंजम्पशन के लिए यूजफुल नहीं है, याद रखना. सो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एल्गे. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एल्गे. They have given the separate class because of their unique production mechanism and their potential to mitigate most of the drawbacks of first and second generation biofuels. So fourth generation biofuels are जो है these fuels that are genetically engineered to take high amount of carbon are grown and harvested at biomass. Then these crops are then converted into fuels using second generation technique. Then Botswana, this is the country in Africa. ठीक है, so it was in news because 100 of elephants have died over here and reason is not known yet. 70% of this territory is being under Kalahari desert. तो ये hot desert है. तो देखते हैं मैप में बोट्सवाना कहाँ पे. ठीक है, देखो यहाँ पे बोट्सवाना है, तो मतलब साउथ एंड साउथ ईस्ट में वी कैन सी वी हैव साउथ अफ्रीका, वेस्ट में नाम्बिया, नॉर्थ में जाम्बिया एंड नॉर्थ ईस्ट में जिम्बाब्वे. तो ये कंट्रीज बॉर्डरिंग है बोट्सवाना को. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमको. तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, याद रखना. बोट्सवाना जो है अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्री है, यहाँ पे तुम्हारा कालहारी डेजर्ट है. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द सेशन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो. थैंक यू.